सो दिस इज़ स्क्रैम्बलर 400X और ये काफ़ी अच्छी बाइक है चलाने में हर चीज़ में एंड I've done around 1600 kilometers on this bike. I've taken it to चक्राता and दिल्ली नोएडा में for local running मैं इसको यूज़ करता हूँ. I'm going to tell you कैसी है, चलाने में कैसी है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें अच्छी, क्या क्या और इम्प्रूव किया जा सकता था. So overall you can see the look of the bike. Look and finish में I would say it is इस segment में one of the best because सारी चीज़ें स्क्रैम्बलर ने ट्रायम्फ ने बहुत अच्छी दे रखी है इसमें. So let's start with the handle. So handle is good. Sitting position काफ़ी सही है इसमें and चौड़े हैंडल्स दिए हैं. रेस्ट ये इसका स्पीडोमीटर है. दिस कुड हैव बिन मोर डिजिटल एंड ठीक है फाइन, नॉट एन इशू. बाकी आगे चलते हैं. द सीट इज़ एक्सट्रीमली comfortable फॉर लॉन्ग राइड्स फॉर राइडर एंड द पिलियन. So this is an aftermarket accessory from Karol Bagh regarding ये जो टॉप बॉक्स हो गया एंड backrest for pillion. So this is very important if you are riding with pillion in city or in highways because बाइक का एक्सेलरेशन ऐसा है कि अगर आपने उसको सडन एक्सेलरेट किया देन चांसेस है कि पिलियन डिसबैलेंस होकर गिर सकता है. ओके, नाउ कमिंग टू द engine. Engine is super fine, super refined. जो इसके पावर फिगर्स है वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंजन लाइक इन इवन इन लार्जर गियर्स ये सिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है एंड तुरंत उड़ जाता है. सो अदर थिंग इज़ द बाइक इज़ लिक्विड कूल. हीटिंग इश्यूज मैंने अब तक फेस नहीं किया है एंड दिस इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट कूलिंग सिस्टम जो स्लो स्पीड में इसका फ़ैन ऑन होगा. when you're on the high speed it automatically senses और इसका फैन बंद रहता है उस टाइम. दिस इज़ दी ऑक्सिलरी लाइट जो इस पे मैंने लगवाई है एंड इसके आगे आपको एक ग्रिल दिखता होगा जो हटा दिया है मैंने बिकॉज किसी काम का था नहीं वो एंड लाइट उससे काफ़ी कम आती थी. सो वो मैंने हटा दिया परमानेंटली बिकॉज ट्रायम्फ हैज़ टू डू समथिंग विद द हेडलाइट ऑन दिस बाइक विच इज़ रिक्वायर्ड. नहीं तो इसका जो थ्रो है बहुत ही मतलब रात में तो बिल्कुल ही बेकार है आई वुड से. So now coming to the ergonomics and things. So now coming to the wheel size. आगे वाला wheel it's how much 119 inches ये रहा and काफ़ी बढ़िया है, कंट्रोल काफ़ी अच्छा देता है. देन पीछे वाला व्हील देखते हैं. दिस इज अराउंड दिस इज R17 140/80 R17 which is also a good tire. ऑफ रोड ऑन रोड हर जगह ये काफ़ी सही रहता है. इग्नोर द ट्रैक्टर नॉइस. ओके, कमिंग टू द ब्रेक्स. लाइक इसमें काफ़ी इंटरनेट ऑनलाइन फोरम्स पे देखा है कि ब्रेक्स का रिलेटेड इशू है. जब मैंने बाइक ली थी मैंने भी फेस किया था बिकॉज इससे पहले मैंने हिमालयन की टेस्ट राइड ली थी एंड उस पर ब्रेक्स जो हैं काफ़ी मतलब बाइट अच्छा है. सो आई वॉज स्पेक्टिकल कि क्या करे मतलब सी इन सिटी यू वांट अ बाइक like very nimble and things, so this is better than Himalayan in those aspects, but braking में that is much higher. So इसके अंदर मैंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं रिसर्च एंड जुगाड़ किया. So I have changed the original brake pads and I have installed Vesra के ceramic brakes पीछे and then one more thing, you can adjust the brake lever because Himalayan's brake lever is थोड़ा up, ये चीज़ उसमें थोड़ी ऊपर है. So you can get this adjusted. You can go to Triumph showroom or service center, they can do it. Else you can go to your local mechanic, they can do it काफ़ी अच्छे से. So this is the brakes and वेसरा के बाद भी आई वॉज नॉट गेटिंग दैट फीडबैक. सो आई मैंने इसको जब एडजस्ट करवाया थोड़ा सा बाहर की तरफ एंड थोड़ा ऊपर की तरफ,
सो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस पे. कमिंग ऑन टू दी राइडिंग डायनेमिक्स. सो अभी मैं राइड करके आपको इसके बारे में समझाता हूँ. हाउ आर द राइडिंग डायनेमिक्स ऑन दिस. सो दिस इज द राइडिंग डायनेमिक्स ऑफ द बाइक. लाइक अपराइट पोस्चर बिना किसी इश्यूज के, एंड चलाने में बाइक इज बिल्कुल लाइट. यू विल नॉट फील दैट यू आर राइडिंग अ बल्की बाइक, 400cc बाइक. सो quite maneuverability is there in the driving, and you can see the pickup also. You can feel the punch, like जैसे ही आपने accelerator दिया, because this has a ride by wire technology, so it's an electronic accelerator. So on the curves also it is quite good. So let's see the power of the bike. So this road pe I was only able to reach to the fifth gear, but it was touching around 110, 120, and on long rides it is quite convenient on these speeds, near around 100 and 110. So I don't feel any kind of vibrations on this bike. काफ़ी सही है. And now let's take a U-turn. It is far better than Himalayan in terms of maneuverability in the traffic and like cutting on the road. छोटी छोटी जगहों से जो आपको निकलना होता है ट्रैफिक में, you can easily do this in this bike. Now let's see the braking part of it. I am at 80, and I'll use the rear brakes only. So ABS kicked in, tires lock नहीं हुए, and the braking is good. Like once you are able to adjust the brake pedal or the brake lever, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है. So this has a dedicated off-road mode. Like when you are going to the off-roading patch where you need more power or like traction control नहीं चाहिए, you have that. Overall, I would say like Triumph has produced an exceptional product with collaboration of Bajaj, and front brakes are good. इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी. Like people do change the brake pads of speed 400 in this centered ones, but front brakes are good. Once again you can feel the pickup, and braking. So I would say overall it's a good product, and anybody who needs a बाइक जो ऑफ रोडिंग भी कर सके, हाईवे भी कर सके, सिटी राइड्स में भी बढ़िया हो, सो दिस इज वन ऑफ दोज बाइक्स. एंड द बेस्ट पार्ट इज द फिट एंड फिनिश इज अमेजिंग. लाइक क्वालिटी पूरी है इसमें. कहीं से ये नहीं लगेगा लाइक कॉस्ट कटिंग की गई है. यू कैन सी दी वेल्डिंग जॉइंट्स एंड थिंग्स, दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी. लाइक लग रहा है ट्रायम्फ का प्रोडक्ट है ये. एंड I got it for around 3 lakh 8,000 from Noida. So good product. The suspension is amazing on this bike, and like upside down forks hai, so you get a better suspension on this. Piche there is a mono suspension, which is fine. Like I don't have any problem while riding this bike in off-road or any kind of conditions. So ये थोड़ा सा टूट गया था, like somebody hit me from behind, so
थोड़ा जुगाड़ करके इसको ठीक किया हुआ है। एग्जॉस्ट नोट, इफ आप लोगों ने नहीं सुना है तो लेट मी स्टार्ट द बाइक फॉर यू। ओके, काफी सही है, लाइक गुड साउंड। Some things Triumph could have improved in this bike. Obviously, the rear brakes थोड़े बड़े दे सकते थे, and maybe ceramic brakes आते Triumph की तरफ से तो काफ़ी अच्छा रहता इसमें. And other thing could have been this headlight का throw. This is something they need to work on, and this speedometer. So the tank is around 11 or 13 liters. I'll figure it out and put it on the screen, the real numbers. इससे I got a average of around 31 on the highway and around 28 I get in the cities. So this is one thing. One thing more which can have been improved is यहाँ पे एक mudguard type कुछ दे सकते थे, क्योंकि when the pillion sits, if you are riding in the rain or things, then पूरा गंदा कर देता है वहाँ पे. So that's all my review for Triumph Scrambler 400X.